Assalamu alaikum viewers and welcome to the topic of future indefinite passive. Today is the future indefinite passive of the series of active passive. We have done present indefinite passive, we have done past indefinite passive, and today we are going to start future indefinite passive. Once again, I would revise that in present indefinite we use is MR. In past indefinite, we learned was were, and today the topic is future indefinite passive. So we will use the future helping verb will be. यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लगेंगे इज एंड आर. जब पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव हो तो हेल्पिंग वर्ब was और वर. अब चूंकि फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव है तो हेल्पिंग वर्ब भी फ्यूचर सिंपल यानी कि विल बी लगेगा. So let's start today's topic, future indefinite passive. The formula is object plus will be verb third form by personal pronoun and remaining part of sentence. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपको याद दिलाता चलूं, रिमाइंड करवाता चलूं कि एक्टिव और पैसिव में फर्क यह है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाकर पर्सनल प्रोनाउन बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम स्टार्ट में ले आए और उसके बाद जमाने के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. आज चूंकि बात हो रही है फ्यूचर इंडेफिनेट की, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में हम विल बी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे कोई भी पैसिव हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ही विल लर्न इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश सीखेगा. इंग्लिश विल बी लर्न्ड बाय हिम. अगर जुमला नेगेटिव होता कि वो इंग्लिश नहीं सीखेगा, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, तो हम नॉट लगा देते हैं. English will not be, will के बाद not, English will not be learned by him. Now the next example is she will help me, वो मेरी मदद करेगी. ये एक्टिव है. अब इसे ले जाना है पैसिव में, जहां पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, she को पर्सनल प्रोनाउन में ले जाके her और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे. So she will help me. I will be helped by her. अगर जुमला होता she will not help me, तो I will not be helped by her हो जाता. Now the next example, another example we have, Ali will not do business. Ali will not do business. Ali business नहीं करेगा. अब पैसिव कैसे बनेगा? बिजनेस को स्टार्ट में ले आएंगे. बिजनेस विल नॉट बी डन बाय अली. अली जो कि सब्जेक्ट था उसका जिक्र हम आखिर में करेंगे और जो बिजनेस जो ऑब्जेक्ट था उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. विल यू बाय अ न्यू मोबाइल. विल यू बाय अ न्यू मोबाइल, दिस इज इंटेरोगेटिव. क्या तुम एक नया मोबाइल खरीदोगे? विल अ न्यू मोबाइल बी बॉट बाय यू, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो विल, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा. She will perform her duty. Her duty will be performed by her. Again थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का पैसिव हो, पास्ट का पैसिव हो, फ्यूचर का पैसिव हो. जहां आप पैसिव का जुमला बनाएंगे वहां हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. I will inform you, मैं आपको इत्तला कर दूंगा. I will inform you, मैं आपको इत्तला कर दूंगा. You will be informed by me. She will take class. अब ये एक्टिव है. Class will be taken by her. We will make a plan. A plan will be made by us. तो we को हमने us कर दिया, I को me में कन्वर्ट कर देंगे, he को him में कन्वर्ट कर देंगे, she को her में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं.
लेकिन अगेन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर कोई चीज आपके जहन से मिस हो गई हो तो वो हर टॉपिक में, हर वीडियो में आपको वो याद आ जाए। शी विल डू दिस वर्क, दिस वर्क विल बी डन बाय हर। विल यू टीच मी, अब ये सवाल है, विल यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? विल आई बी टॉट बाय यू। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज द future indefinite passive in which we use will be. All three indefinites have completed: present indefinite, past indefinite, and future indefinite. Now the next video is about continuous. So keep on watching and keep on learning. See you inshallah. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।